Now, significance of national monetization pipeline goes for resource mobilization. And what is this? There is mobilization of resources that are under the national monetization pipeline. तो वैसे प्रोजेक्ट जो कि बहुत सारे रिसोर्सेज को कैटर करते हैं उनको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में मोबिलाइज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. देन देयर इज फिजिकल प्रोसीजर विच टेक्स solution from the banks and NBFCs. So banks and non-banking financial companies capital expenditure करती हैं. Third is mobilizing the private capital. तो private sectors के द्वारा फंड को इन्वेस्ट करना इन प्रोजेक्ट्स में, that is again a part of dynamical adoption of evolving global sector into reality. Then third part goes for the resource efficiency through optimum utilization of government assets. Then last goes for investment into the assets by the government entities. For instances, increasing urban charges, private sectors by promoting adopting public transport and communication. Then benefits of environment leading to protection of environment and safeguard measures by these entities. Then there is a cooperative federalism. It also promotes the equal development of various each states from different demonetization and monetization pipeline, and there is strategic disinvestment, then there is minimum monetization fund, then there is capital disbursement to various states up to 5,000 crore as an incentive. Then last and not the least is promoting public private partnership. It also helped the government as well as the private companies to took into part of developing the core areas of competencies and help in delivering socio-economic growth. So remember this 8 points for your prelims as well as main point of view. Very important. There is regulatory challenges of sectoral regulators that leads to structural problems and legal uncertainties in the bond markets. So bond market have various problems. So bond market के problem को help करने के लिए government क्या करती है? Sovereign gold bond. So these are sovereign bonds, and which is also leading to compounded inefficient dispute resolution mechanism, allocation of assets owned by government to private investors, further subjected to political influence which can lead to corruption. भ्रष्टाचार से बचाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. Still we saw there is corruption in the government as well as the private sector entities. So in order to cater such issues, there is such kind of bond market. प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY. So that again leads to universal banking services by बापू जैन. 2016 में गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ जॉइंट जन धन अकाउंट एंड मोबाइल खाता इन विच every person of India should have must have a bank account by himself in any kind of bank, whether it is private or public bank. It is linked to be biometrically authentic program intake, and further it is linked with their mobile information with internet connectivity. That again leads to pension scheme for unorganized sectors. Remember this fact. अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी रेडी पटरी वाले के लिए, अखबार वालों के लिए, छोटे छोटे विक्रेताओं के लिए भी ये उद्योग शामिल किया गया. देन थर्ड पार्ट इज बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद द ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 टू एवरी हाउस होल्ड. प्रत्येक घर के निवासी को, प्रत्येक घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए 10,000 रुपये से कम के खाते का शुरू किया जाना भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल था. Then there was a micro insurance that was a part of this project, in which there is a minimum insurance facility for every person who has their account in the banking system. Then there is financing literacy program, again very important, in order to educate the people in terms of their financial knowledge and calibrate their brain to learn about the financial system, the banking system, insurance, and the facilities provided by the banks is also a part of this project. Last is creation of credit guarantee fund.
That means there should be a minimum guarantee of having certain credit in order to have certain funds from any bank. This again makes a part of this scheme, that is Jan Dhan Yojana. What is next part is the gateway to the financial inclusion. How there is a issue of financial inclusion in India. भारत में जब भी हम बात करते हैं वित्तीय अनुकूलन की, तो उसमें बहुत सारे समाज के कई वर्ग आते हैं जिनके पास बैंकिंग खाते नहीं हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं है, उन्हें पेंशन नहीं मिलते, एंड दे आर फेसिंग अगेन वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस. तो उन सभी वर्गों के नागरिकों को बैंकिंग सेक्टर में शामिल करना, दैट वाज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम हेल्प्स फॉर माइक्रो फाइनेंशिंग इंस्टीट्यूशंस and helps the unreserved cash economy. So वैसी कैश जो कि बैंकों में पड़े रहते हैं and that is not being circulated is again being used by this part of economy. It leads to the transaction account and also having structured assets. Then there is card companies, postal networks, financial and cooperative sectors which help in saving bank account and helps in credit development. Further, it helps in payments and insurances, further help in remittances, and helps in service of the public who are having account in their proper range of system. So there is service providers and services taken by the public, and thus there is a broader inclusion of आम आदमी यानी लोकल पब्लिक का ब्रॉडर इंक्लूजन है इसमें. देन देयर इज कस्टमर सेंटर प्रोडक्ट इनोवेशन, फाइनेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड बेटर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, more and interoperable access points. Remember this fact for your prelims and mains point of view. Now some issues with the pension which makes the news. Pension is an affordable manner. पेंशन जो कि रिटायर्ड लोगों के लिए ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए भी जरूरी है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज चैलेंजेस. तो उनके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द प्रोसेस टू एक्सेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर द वल्नरेबल ग्रुप्स. व्हाट आर द वल्नरेबल ग्रुप्स? ओल्ड एज्ड, तो ऐसे लोग जो कि वृद्धावस्था में हैं, डिसेबल्ड हैं, दिव्यांगजन, महिलाएं, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड माइनॉरिटीज एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन. These all are the vulnerable sections. They are getting profit from their banking account opening and linking with their mobile banking, internet banking and distant locations. So it also enhances the transparency by the institution and leads to inclusive growth. Further, the concept of financial inclusion launched in 2005 by Reserve Bank of India, which makes the objective to ensure access of various financial services such as need-based credits, insurance, pension to the excluded section, that is weaker section of the societies. इन सभी weaker sections के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन का मोटो स्टार्ट किया, जिसमें इन सारे सेक्टर्स को फाइनेंशियल बेनिफिट्स, क्रेडिट्स, लोन्स और बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई. फर्दर देयर इज ऑपरेटिव अकाउंट ऑफ 85.6% which are being opened by various banks under financial inclusion schemes. Deposits having made 6.38 times from 2015. तो इनके बारे में कुछ आंकड़े ऐसे दिख रहे हैं जो कि रुपे कार्ड हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू वेरियस यूजर्स. देन जन धन दर्शक ऐप इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू लुक इनटू वेरियस काइंड ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज, challenges and their utilities. Over 8 lakh banking touch point have been opened. Then there is banks open to various procedures. There is direct benefit transfer about the 5 crore Pradhan Mantri Jan Dhan Arogya Khata having DBT from the government and various schemes. Now what is the impact on financial system? It prevents the leakage and reduces the loopholes and caters the
bottlenecks in the financial system. So ये bottlenecks को, loopholes को cater कर रहा है, and it prevents the leakage and corruption. So corruption protection. Further, Pradhan Mantri Jan Dhan Arogya account has ensured every rupee reaches to its beneficiary. एक एक रुपया और एक एक पैसा जो जरूरतमंद लोग हैं, समाज के किसी वर्ग के लोग हैं, तो उनके पास तक हर एक मुद्रा पहुंचे, and preventing systemic leakage, that is again corruption unit. Financial inclusion provides foundation of the poor people centric, लोगों के मदद के लिए पुअर पीपल सेंट्रिक बनाया गया इसे, एंड हेल्प्स इन द मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना फॉर लाइफ एंड डेथ इंश्योरेंसेज, जीवन मृत्यु का इंश्योरेंस, एंड मैरिज इंश्योरेंसेज, देन बैंक अकाउंट विच PMGDY हैज कंप्लीटेड फॉर्मलाइजेशन इन फाइनेंशियल सिस्टम. जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उनमें फॉर्मलाइजेशन किया गया, जिससे कि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लोग भी बैंक खाता खोल सकते हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ विलेजेस विच आर टेकिंग देम आउट ऑफ क्लचेस. तो विलेजेस और ट्राइबल्स एरिया तक भी इसे पहुंचाया गया है. नाउ वी सी दैट स्टेप बाय स्टेप फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना, जन धन योजना. Now जनधन खाता started from opening a bank account. पहला स्टेप बैंक खाता हम खोलते हैं. Then second step goes for interest deposit if you are taking any loan, and branch business correspondent by Bank Mitra. तो बैंक मित्रा के द्वारा आपको मदद मिलती है. Then account which having certain kind of balance, you take certain loans, आप कुछ लोन लेते हैं, उस पे आपको 1 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. देन देयर इज नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, किसी प्रकार का न्यूनतम धनराशि इस खाते में जरूरी नहीं है. देन देयर इज लाइफ इंश्योरेंस कवर अप टू ₹30,000. इन केस ऑफ फैटेलिटीज यू गेट 30,000. देन नेक्स्ट इजी ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया. पूरे भारत भर में अपने खाते से दूसरे खाते में अगर पैसा भेजना है तो आसानी से आप भेज सकते हैं. Beneficiaries of government scheme direct benefit transfer account, that beneficiaries goes into DBT account. Next part goes in satisfactory operation of the account for 6 months overdraft facility, 6 महीने की overdraft facility है. Then access to pension insurance product. Next leads to accidental insurance cover through RuPay card up to 45 days at least. And last is the facility of up to 10,000 rupees to one account per household, preferably lady of the house. अगर उस परिवार में कोई महिला है तो उसके खाते में कम से कम 10,000 रुपये जरूर जमा किया जाता है इस खाते के द्वारा. रिमेंबर दिस फैक्ट अगेन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये खाता काम करता है. प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत. नाउ नेक्स्ट पार्ट विच कम्स इज द एसेट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. कैसे हम वित्तीय अनुकूलन या वित्तीय एकजुटता, समाविकता हम कैसे करते हैं. दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम. सो देयर इज अ बैंक ब्रांचेस विच ओपन्स द अकाउंट. देन देयर इज नंबर ऑफ ATMs प्रोवाइडेड बाय ओपनिंग द अकाउंट. देन देयर इज बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट्स. बैंकों में कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जो भी स्कीम्स, पॉलिसीज, इंश्योरेंस की योजनाएं आती हैं वो खाता धारकों तक ये पहुंचाते हैं. एंड देयर इज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एक्सेट्रा. पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल भी होते हैं जो कि बहुत सारे बैंकों के द्वारा मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, इन मार्केट्स में आप देखते हैं वो क्रेडिट कार्ड, बैंक खाता ओपन करने के लिए आपको बार बार कहते हैं. देन देयर इज यूजेज थ्रू फ्रिक्वेंसी ऑफ अकाउंट यूजेज. कितने ज़्यादा आप खाते को यूज़ करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को ये ट्रैक करते हैं. देन देयर इज क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड इंश्योरेंस, कैशलेस एंड मोबाइल बेस्ड ट्रांजेक्शन and remittances cover. These are all facilities in this system. Then last is the quality of delivery, that is financial literacy, consumer protection,
inequalities and deficiency in services, grievance redressal, and so on and so forth. Now, managing such kind of ecosystem in business correspondence is again a part of this system, which is taken through the subsidiaries and remuneration generation by Manrega, direct benefit transfer, pension in villages by banking correspondence. तो बैंक के जो correspondents रहते हैं, correspondent रहते हैं, वो अपनी facilities को लेके villages में, local areas में लेकर के जाते हैं. Then there is lack of effective grievance redressal system and absence of proper training to the banking correspondent agreement agents. Now these are the challenges in the system. Remember this. So what is the way forward? क्या इससे उपाय है? So there is financial empowerment going forward, and there is need to move from financial inclusion to financial empowerment by the providing the credit. Financial inclusion से financial empowerment की तरफ बढ़ाना ये एक मुख्य मुद्दा है. Then next part is universal access to the banking credit to the most of underprivileged section. जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके पास भी क्रेडिट का पहुंचना, बैंक खाता का पहुंचना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. And infrastructure development, then model of credit history leads to reduction in the cash transaction and moving to digital transaction, building of credit models and using artificial intelligence techniques to promote digital payment in the banking corresponding model, which prevails the development of Jan Dhan Khata. Further, it leads to cost-effective, techno-savvy, economically viable business model and access to account holders, improving access of PMJDY account holder. Then there is microcredit and micro-investment such as flexi recurring deposit. Further, it creates database of the system which needs to build up database to capture the income. And as now we have aggregate data, we can use this data for banking and fintech cards. So PMJDY holds greater promise than its predecessors because of geographically widespread. Remember this fact, these are the benefits out of PMJDY and banks, regulations, critical stakeholders that take part in the banks and regulations. Further, it provides opportunities for inclusive development and growth and provides positive attitude, dream of financial services which can be achieved in the rural areas also. We see that there were problem in the traditional banks. तो पहले के जो बैंक होते थे उनके पास क्या चुनौतियाँ होती थी? There was physical banking only, no online banking. Second was 100 years of age problem, then long term in person and minor changes, in person, phone, online, highly complex entire system. So we see that service platform in neobank having web and mobile services. So online banking आप कर सकते हैं. There is market entry in which the private players can again participate in terms of non-banking financial companies, NBFCs. Then client relation is good. There is flexibility, virtual easy relationship with the clients and the managers. Customer support is 24 hours for every person. Minimum fees, lower transparent fees, and banking license is provided, and partial and rental system is there. Bank offices are there to provide support to the customer, and confirmation process there for instant payment. Now there are certain issues also with the new banks. नए बैंकों के साथ कुछ issues भी आ रहे हैं, that are complex IT legacy. Second is the inadequate data architecture. जो data है वो systematize नहीं रहता है, and that data is again inadequate. Next is higher cost of management. जो भी management वाले लोग हैं उनके salaries में, pension में, that again takes a higher cost due to artificial intelligence and online database system. Further, it lacks the advanced technologies and security system. So हम देखते हैं online banking में बहुत सारे data threat होते हैं. Pegasus kind of software are there,
which penetrate into your system and has a virus impact on your system. Next part is new bank in terms of fintech firms providing banking services such as saving account. They do this via Reserve Bank of India licensed banking system. Neobank generally get investment advisor licenses. Then some countries such as United Kingdom have formal regulatory license and there is no such category of banks under RBI rules. तो RBI के द्वारा ऐसे कुछ बैंकों का कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है. Still new banks are working. But what are the benefits? They are mobile first, leveraging technology to minimum operation, customer friendly interface, and they are having small banks allow them to offering higher interest cost, single new bank tie up with multiple regulated banks, analyze and track the spending. There is choices and better customer experience with the following data. So first is new account online can open just a few minutes. You see that online account opening by KYC plus video verification is done by such banks. In few minutes आपके पास कोई भी अकाउंट जो आप चाहते हो वो खुल के रेडी हो जाता है. देन कनेक्शन ऑन एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट्स, जो भी एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उससे आप अकाउंट की लिंकेज कर सकते हैं इन वेरी शॉर्ट टाइम. रिसीविंग पेमेंट्स इमीडिएटली विद द इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे IMPS के द्वारा एंड स्विफ्ट के द्वारा आप बहुत ही फास्टर बैंकिंग सर्विसेज कर सकते हैं. आप बिल्स यू कैन पे योर बिल्स थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस.